Okay, so we are live. Let's begin with a minute of silence. Okay. नमस्ते एंड गुड इवनिंग आप सभी को। तो एक काफी समय के बाद हम दोबारा से उपस्थित हुए हैं अपनी अंदाज़े कथक की लाइव बैठक में जिसमें कि साल भर हम जो भी सीख रहे हैं कथक में, कथक के माध्यम से और कथक के द्वारा डेफिनेटली एक स्किल, एक कौशल तो विकसित हो ही रहा है, बट उसके साथ साथ और क्या क्या लर्निंग्स हम लोगों की होती हैं थ्रू आउट द प्रोसेस, तो उसी को ही साझा करने के लिए आज वैभव हमारे साथ हैं, जो एक लंबे समय से ऑनलाइन कथक की शिक्षा ले रहे हैं, कथक सीख रहे हैं और अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने की भावना रखते हैं उसके साथ। तो शुरुआत करते हैं वैभव आपकी आज की प्रस्तुति से। तो प्लीज थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और थोड़ा बताइए आप कब से सीख रहे हैं, क्या आपको मोटिवेट करता है कि आप अभी तक कंटिन्यू कर रहे हैं, और आज आप हमारे सामने क्या प्रस्तुति देने वाले हैं। ओवर टू यू वैभव। Namaste सभी को and thank you so much Anu for giving this opportunity today. तो 2 साल से ज्यादा हो गया, मतलब जब से कोविड की शुरुआत हुई तब से ये चल रहा है और कोविड के बाद भी ये कंटिन्यू हो रहा है। कभी कभी मन भी करता है कि ऑनलाइन की जगह पे फिजिकली करना शुरू कर दे, पर वो मुमकिन नहीं है क्योंकि मैं एक खेत में रहता हूँ और वहाँ पे प्रकृति के साथ एक संबंध बनाने की, उसके साथ जुड़ने की कोशिश चल रही है। तो वो जो कोशिश है उसको मैं कथक के माध्यम से भी आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और जो भी साधना चल रही है तो कथक अभी एक साधना के रूप में भी लिया गया है, जो ना ही एक फिजिकल ग्राउंडिंग देती है, एक अपने आप में एक शांति और नीरवता प्रदान कर रही है, पर एक नया उमंग लेके आ रही है। हर बार कुछ नया सीखना है और जो खास करके जो समन्वय बनाना है, what we can call it, कि एक there is seeking for this perfection, this which is waiting. There is some harmony which needs to be built up between your thoughts, between the words, between your own body, and within the body also, where your legs are going, where is your hand are going, where is your eyes going, where is your neck is bending. All those different elements of our own body needs to come in that alignment as a one unified being, and that one unified being coming also with the expression, with the idea, and all together in harmony presents, expresses in this world, is what I am personally learning, and that's what keeps motivating me to continue learning Kathak. And today I'm going to present 3 things in front of all of you. Rather than presenting, I would say that would be my offering to this dance form,
a humble offering, whatever I have learned, and with all my mistakes. So do pardon me for all my mistakes, which might happen. So my first portion, the first piece which I'm offering is Saraswati Vandana. To begin any work, we invoke, we invite, and we establish in our environment, in ourself, the power of the goddess. And particularly, Mahasaraswati is looked after for the perfection and the order in the world. That's what I connected with this time. Thanks to some of my friends who are here, whom we will meet towards the end. I came to know who Saraswati is. It's not just about the knowledge, but paying this attention to detail, intuitively knowing and trying to figure it out best way is something of a power which Mahasaraswati gives. So let me present first Saraswati Vandana, which has a sargam to begin with, followed by Saraswati Vandana. I will do Bhumi Pranam before starting.
सा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापः निशेष जाड्यापः निशेष जाड्यापः Would you like to share about your next piece, Vaibhav? Yes. So the second piece is set in ताल, तीन ताल with द्रुत लय, और उसमें मैं 4 चीजें कर रहा हूँ. शुरुआत में गत निकास, जिसको सीधी गत भी कहा जाता है, which is more about gestures while walking. उसके बाद छोटा सा 2 टुकड़े हैं जो कथक की बंदिश है, जो कथक के बोल पे आधारित है. उसके बाद परमेलू, जो नेचर में, कुदरत में जो भी आवाजें हैं, पशु पक्षी की आवाजें हैं, झरने की आवाजें हैं, उसको लेके उनके बोलों को इकट्ठा करके एक बंदिश बनाई गई है, जिसको परमेलू कहते हैं. वो मैं प्रस्तुत करूंगा. और उसके बाद फरमाइशी तोड़ा, जिसकी खासियत है कि वो एक चक्करदार तोड़े की तरह आता है और उसमें 3 बार ये दोहराया जाता है. तो पहले पल्ले में जब पहली बार धा आता है, दूसरे पल्ले में जब दूसरी बार धा आता है, और तीसरे पल्ले में जब तीसरी बार धा आता है, तब हम सम लगाते हैं. तो ये 4 चीजें मैं अभी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ. धा दिन दिन 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 धा दिन तत् ता थी तत् आ थी तत् ता थी तत् आ थी तत् ता थी तत् आ थी तत् धा गिट तक धा गिट कत गदि गने ना गिट टिकट धा दिन ता कत धा निधि किट धा जना कत थी तत् ता थी तत् आ 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 थी तत् धा किट तग धा गिट कत गदि गने ना गिट टिकट धा दिन ता कत धा गिट 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 गिनत धा धा गिनत धा धा दिन दिन 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 धा दिन दिन ता थुंगा तक्का थुंगा थी ता थी तत् 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 थी ता दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन ता दिन दिन धा दिन दिन धा दिन दिन ता दिन दिन ता दिन दिन ता थुंगा
ता थुंगा तक्का थुंगा थे ता थे ता थे तत थे तत थे तत थे ता थुंगा तक्का थुंगा थे ता थे तत थे तत थे तत थे तत थे तत थे तत थे ता थुंगा तक्का थुंगा थे ता थे तत 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 थे धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा ता थरी कुकु ता थरी कुकु झन थरी कुकु झन थरी कुकु थरी क जनक झन दृग दृग थे तत थे कुकु झन नन दृग झन नन ता झन ता तदेत अदेत तत थे तत थे तत थे ता झन ता तदेत अदेत तत थे तत थे तत थे ता झन ता तदेत अदेत तत थे तत थे तत थे ता दिन दिन दा धा 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 दिन दिन धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा ता थे तत आ थे तत तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे ता थे तत आ थे तत तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे ता थे तत आ थे तत तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे तिग धा दिग दिग तिग धा दिग दिग थे धा दिन दिन दा 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 धा दिन दिन धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा और आज की शाम का आखिरी ऑफरिंग, without which I would not have been able to sustain and do the Kathak today. This is the song which revealed many things, and till the last moment there is something or other still coming it up. The song is a Kabir bhajan, a Kabir song. Moko kaha dhoonde re bande, main to tere paas mein. But this is very perplexing. If that divine or that perfection or that potential or the God or Allah or whatever name one wants to call it, but that divine perfection, that potential is within all of us. How do we connect to that and express it rather than searching it outside is the story. तो इस गाने को मैंने कुछ इस प्रकार से सजाया है कि हम सब लोग कुछ ना कुछ तो चाहते रहते हैं, and we are always looking it out for that peace or a happiness or a success, name, so many things, and we are keep on looking it out for, and for that we pray, we meditate, we exercise, we do so many things. So here is a story of a person who is in lookout, who is searching through various means, through various medium and tools, that perfection, and eventually when it finds, where it finds it. तो प्रस्तुत है मोको कहा ढूंढे रे बंदे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे,
मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना तीरथ में ना मूरत में, ना एकांत निवास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में, ना मंदिर में ना मस्जिद में। ना काबे कैलाश में, ना काबे कैलाश में। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में। ना मैं जप में ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में। ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना मैं क्रिया कर्म में रहता। ना ही जोग संन्यास में, ना ही जोग संन्यास में। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। खोजी होए तुरत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। खोजी होए तुरत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। कहत कबीर सुनो भई साधो, कहत कबीर सुनो भई साधो। मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मैं तो तेरे पास में, मैं तो तेरे पास में, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। Thank you everyone for joining, watching us. Yes, continue, Vaibhav. Yeah, so there's a lot of gratitude. Just a second. Many people without whom this would not have been possible at all. Starting with Anu for giving this beautiful song and the whole idea
of doing the Kathak and doing these 3 pieces today. Then Aparupa for continuously motivating and asking and helping with the Sargam part, Saraswati Vandana, and the Drutlay part. Preeti ji for showing up every day in the evening and practicing it together. Without support, I would not have able to like practice and make it little bit of a perfection. I know there are still many parts, and more I'm practicing it. Every time I realize, oh, ye theek nahi ho raha. Oh, I missed that point. Oh, this detail. Like even yesterday, like, there was some minor detail. My eyes doesn't go, but this Saraswati is here. Their attention to detail is so precise, and they note down also everything. My notes are almost blank notes, so I'm learning that too from them. So thank you so much for making those wonderful notes and paying attention to those details. And I'm now started learning like, okay, where your hand would go, how your eyes would move, how it should be formed. Varna, you are just dancing it, you are just doing it. So this Kathak has given me this paying attention. What does it mean really? Paying attention to detail. What does it mean by coming to perfection? And the definition of a perfection is not a state or something like you did it. But at this point of a time in last 15-20 minutes, whether I was able to connect completely with the music, I was able to connect with my body. And in that moment, in that space where I was able to bring out the best or not, that's what the perfection is. And each time it's going to be redefined. It's very dynamic. So that's where the joy lies, is because you know that you are still progressing and there is peaks to climb to keep on progressing. And also thank you to Kapil, Shrinkla, Shabbar, and other who had been instrumental for Ishita, Didun, Devanjanda. They all somewhere or other supported today. Abid Bhai for Fatima Ben, like getting ready, this dress, how many rounds it had taken from here to there and finally reaching to me. So every small thing has many stories. And then Mona and Swapna ji here. I don't know whether they have joined or not, but thank you for joining evening classes and blessing and encouragements. I can go on, but I think I would pause here. स्वप्ना जी, आपका आशीर्वाद काम आ गया. हाँ. मुझे तो लग रहा है मेरे आशीर्वाद में इतना कहाँ से चमक आ गई. This is amazing. ये तो स्वप्ना जी आप अकेले का आशीर्वाद है. मैं सोच रही हूँ दुर्गा जी का आशीर्वाद भी लगता तो क्या होता. Seriously, आप सही बोल रहे हो. Yes, so I would like to comment on the notes वाला part, वैभव, जो आपने शेयर किया कि प्रीति जी और इनके नोट्स. एक्चुअल में यार आप लोग बना लिया करो, क्योंकि इसको नहीं बनाना आता. इसने पता नहीं कौन से मेरे को फोटो भेजा, उसके नोट्स देख के मैं अपने नोट्स भूल गई कि भाई ये क्या था, मैंने क्या बताया, क्या था. एवरी टाइम आई हैड टू आस्क कि यार वॉइस नोट करके भेजो, मेरे को नहीं समझ आ रहा क्या लिखा हुआ है. So वैभव, यू नीड टू वर्क. जैसे कॉलेज में ना, हमारे कॉलेज में सबसे अच्छा बिजनेस, कॉलेज से अच्छा बिजनेस वो फोटोकॉपी अंकल का था. उनका मतलब एक स्पेशली एग्जाम टाइम पे thousands of pages का फोटोकॉपी करते. तो अभी भी वही चल रहा है. अभी व्हाट्सएप का बिजनेस अच्छा है क्योंकि हम फोटो वहां से भेजते रहते हैं. That's a strange thing. Like in the college days, my notes everybody used to take, even in schools, to take photocopies. And right now there is this, I don't know, when Kathak started, I had like कि पहले कैसे करते रहेंगे. पुराने जमाने में तो ये कुछ था नहीं, हो तो बोल के याद करके करना, ये सारा तो फिजिकल काम ही है. So why to take a notes? So initial few days my notes, there was nothing, blank. I have not written, maybe just a bowls I have written, nothing else written. सब तो याद करना है ना, सब याद रख लेंगे, सब फिजिकल बॉडी याद रख लेंगे. So that was kind of idea and experiments I was doing. But then I found कि नहीं, अभी हमारी बुरी आदत लग गई है, तो वो आदत को ही कंटिन्यू करना पड़ेगा जब तक शायद
that mechanism doesn't develop completely. Right, right. ये situation है. Okay. Apu, Preeti ji, Swapna ji, anyone would like to share anything about Vaibhav's offering today? I think Preeti ji और मैं अपने we were both sitting with finger on unmute, but we were seeing whoever would get there first. But I think एक मैं जो सोच रही थी, you know, as dancers, as Kathak dancer, especially in Kathak, one of the elements that I really enjoy is that natural expression and world building. As a single solo person, you are creating a world for the audience that they believe is what it is. There's nothing around. It's a blank slate, but you're showing, oh, tree hai, and then there is butterflies or birds and all of that. And to be able to do that convincingly is what I saw in Vaibhav's performance today, where when he was looking for God Almighty through the Kabir bhajan, I actually believe that there's a person walking around the countryside, looking here, looking there, carrying their backpack or whatever it is, and looking, talking to people, looking everywhere, being amused by the surroundings, being disappointed, being surprised, and that is what I really enjoyed. And some time ago, I came across this phrase called flow state, where when we are doing an action, we're so immersed in it that we are no longer performing the action, we are literally the action. I can't think of a better way to put it, so that's what I'm saying. So it's like you're so immersed that you don't even know that anything else, any sound exists. So I felt like, especially when Vaibhav entered the Kabir bhajan part of the presentation of or his offering, that he had entered his flow state. Until then, he was still conscious. He's like, okay, I have to get this thing right. I have to get that thing right. And I think at one point in the Saraswati Vandana, I could see that he had entered it. And then again, he got conscious. But then with Kabir Bhajan, he was completely into it. And he was convinced that this is what I want to share with people. And this is how I'm going to do it. And that was very nice for me to watch. I enjoyed it. And I feel like that is something I'm going to take from him today. Thank you. I think I'll take it because Preeti ji seems to be having some connection issues. तो वैभव के आज के जो परफॉर्मेंस था, I mean, amazing. मैंने पहले भी देखा है वैभव का, but I know कि everyone is saying वो amazing बहुत छोटा सा word है, but एक बहुत स्पेशल चीज मुझे लगी, जो मुझे लगा कि शायद मुझे लगी या सच में थी, वो अनुज जी शायद बेटर बताएंगे, but even if he was looking conscious earlier and later he was 100% comfortable, जो मैंने भी नोटिस किया, but he was so, मतलब वो एक ठहराव जो होता है ना, वो आज मुझे वैभव की इसमें इतना ज्यादा लग रहा था. He was like so grounded, मतलब कभी एकदम से कुछ भी ऐसे लग रहा था कि कुछ भी बिखरा हुआ नहीं है, मतलब ऐसे लग रहा था कि he's just there. जो भी वो प्रेजेंट कर रहा था ना, he was just going into it step by step. कुछ ऐसे उड़ नहीं रहा था इधर से, like he was so ठहराव के साथ, मतलब that was like वो एक blessing जैसे लग रहा था. मतलब मुझे देख के उसका बहुत अच्छा वाइब आ रहा था, मतलब उसको देख के. एक तो ये पॉइंट मुझे लगा बहुत सुंदर था, उससे वो सब चीज बहुत सुंदर लग रही थी. और दूसरा चीज मुझे लगा, ये जो अपरूपा जो एक्सप्लेन कर रही है ना, मैं इसको ऐसे देख रही हूँ, जब कबीर का चीज हो रहा था तो वैभव मुझे लग रहे थे कि एक तो वो सारे एक्शंस अमेजिंग थे, इतनी सुंदर एक्शंस थे वो, जो उन्होंने मुद्रा और जो
ये एक्शंस यूज किए, मुझे नहीं पता उसमें मतलब अनु जी का कितना इनपुट था, बट जिस 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 जैसे भी आपने वो जो सेट किया था वो इतना सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि इसको ऐसे ही प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब यू नो द वे you were asking for this address and वो सब जो चल रहा था, it was like a storytelling happening, but उसमें मुझे लगा कि you were playing all 3 roles in one go, like आप इंक्वायरर भी थे और आप वो भी थे जो वो मैसेज भी दे रहे हो, मतलब यू वर काइंड ऑफ एनलाइटेंड आल्सो एट द सेम टाइम, एंड आप इंक्वायरर भी आप थे, और आप वो एक्सपीरियंस जो कर रहा है वो भी थे, मतलब आई थिंक यू वर प्लेइंग ऑल द 3 किरदार इन वन गो। वो शायद गाना ही ऐसा है, वो गीत ही ऐसा है जिसमें you can actually experience all 3, and Vaibhav was playing all 3. I don't know वो कैसे आ रहा था, maybe a combination of action, expression, but it was all 3 of them, you know, were telling a story to you. That was amazing. ये बहुत beautiful piece है which has come out. You should keep the recording. So इतना ही है, I think. Lot of बहुत मेहनत दिया होगा इसमें, I'm sure, Vaibhav. I'm actually trying to do the documentation that I do, visual journaling. So that's why I thought that I'll rather just listen and not be here. But I'm here now, and I think दो तरीके से मैं देखना चाहूंगी जो प्रस्तुति की वैभव ने। पहली बात तो कि I was amazed कि वैभव was smiling all throughout, क्योंकि शायद वो बहुत रेयर है देखना परफॉर्मेंस के वक्त पे, तो वो बहुत ऐसे क्या कहते हैं, that kind of indicated कि ये अलग, this is not the Vaibhav that we've seen before, at least 1 साल पहले जो बैठक थी, this is not the same Vaibhav, और काफी वो ग्रोथ, काफी लर्निंग, काफी रियलाइजेशन, जैसे उसने कहा कि रेवलेशंस हुई है, वो होने के बाद वाले वैभव हैं। तो दैट्स व्हाट आई फेल्ट राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। सम जो लगे, लाइक आई वाज जस्ट लाइक वाओ, लाइक द बॉडी इज नॉट मूविंग मोर देन इट्स सपोज्ड टू, और 3 पैर के चक्कर भी बहुत स्टेडी राइट स्पॉट ऑन थे। तो आई वाज जस्ट like jaw drop kind of moments that okay, it's amazing to see the growth, to see that exact वो वहाँ पे you know जो चाहिए, जो perfection जैसे चाहिए वहाँ तक मन से and body से वो पहुँच रहे हैं, and that's so connected, and you know it's helping the audience also see that sthirta, like Swapna ji said, the ठहराव, because that is, I mean, it's all those things, like the body also conveys so much, like when you're actually, you know, getting it right. So that's what I felt was amazing. मुझे लगा एक ease था comparatively, like in the entire thing there was an ease that he had जो शायद पहले नहीं, मतलब पहले के परफॉर्मेंस में भी शायद नहीं होगा, I'm not able to recollect fully, but there was अलग kind of ease जो मुझे दिखाई दिया इसमें. And yeah, I think we've been part of the journey actually, so I'm feeling like it's a success of all of us in a way, so I'm feeling good about it, that how he allowed us to be a part of the journey. And क्योंकि when one teaches to learn, मुझे तो ऐसे लगता है, तो वो एक लिटरली, मतलब वो जब वैभव वाज परफॉर्मिंग मुझे भी ऐसे लग रहा था कि अच्छा ये चीजें बोली है तो ये कैसे हो रहा है, ये यू नो, सो द अंडरस्टैंडिंग शायद हमारी भी काफी बड़ी है, बिकॉज ही अलाउड अस टू बी अ पार्ट ऑफ हिज जर्नी. So thank you for that, Vaibhav, and I'm so glad that not only you but I think all of us जो अनु जी से सीखते हैं वो ultimately कहीं ना कहीं बैठक के थ्रू, शाम के क्लासेस के थ्रू या इंटरेक्शन के थ्रू वी आर गोइंग मोर विद इन, और हम बाहर नहीं ढूंढ रहे हैं और हम अंदर ढूंढने
का प्रयास शुरू कर रहे हैं और उसकी झलकें जो कहते हैं ना मिल रही है हमें अलग अलग दृश्य से या अलग अलग ऑफरिंग से या अलग अलग मीनिंग से, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ कथक के लिए, कथक के जर्नी के लिए। और वैभव ने जब मोको कहा ढूंढे किया, आई वाज जस्ट लाइक we've used it so many times for meditation and all, and yet it's such a deep truth, बहुत simple truth है। और हमेशा बाहर देखने का जो एक नजरिया है उसको बदलना सिर्फ गुरु के आशीर्वाद से होता है। तो मैं अनु जी का बहुत तहे दिल से शुक्रिया अदा मानूंगी, और जो भी उनके टीचर्स रहे हैं, उनके गुरु रहे हैं। एंड वैभव, आज आप हमारे गुरु थे, तो थैंक यू फॉर दैट। एंड मे वी ऑल कंटिन्यू टू look within and seek within and find within. Maybe tathastu to that. So thank you. इसका मैं एक छोटा सा ऐड करना चाह रही हूँ। आई रियली नोटिस्ड वो जो आपने सम की बात बोली प्रीति, जब एंड में यू नो दैट वो जो ऐसे वाला जो पोज था, मुझे एक सेकंड को लगा मेरा वीडियो पॉज हो गया है। मतलब आई हैड टू रियली चेक, यू नो, ही वाज सो स्टिल। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि लाइक ये इट कैन बी सो स्टिल, जो कई बार अनुजी डिस्क्राइब करते हैं कि लास्ट में वो एकदम से ऐसे फ्रीज करना चाहिए। आज मुझे वो वैभव ने दिखाया। सो थैंक यू फॉर दैट वैभव, वंडरफुल इट वाज। Okay. तो वैभव, मेरा बस एक ही, हालांकि मैंने लिस्ट लंबी चौड़ी बनाई थी, बट अभी मुझे मन नहीं कर रहा है सब कुछ पूछने का। बस एक ही सवाल पूछने का मन कर रहा है, विच इज लाइक जो भी हम लाइक यू नो कथक में सीख रहे हैं, या जो हम थ्रू बैठक, यू नो डिफरेंट, जैसे ये गाने, म्यूजिक, वंदना, बंदिशें, ये सब तो एक यू नो बाहरी एक माध्यम है, राइट? तो जस्ट मेरा एक प्रश्न है कि जस्ट वांटेड टू यू नो इफ यू कैन शेयर कि जो भी आप अभी पिछले 1-1.5-2 साल से आप कर रहे हो, वो चीजों को आप अपना डेली लाइफ में कैसे यू नो उसका एप्लीकेशन आप कर पा रहे हो, या हाउ डू यू कनेक्ट ऑल दीज थिंग्स with your daily life? If you can just reflect little bit on this and share. Maybe list शायद अच्छा होता. Your list of question might have been much easier to answer. Just give me a second just to Yes, kind of. yes. Yeah, so I would start with this kind of a backward journey maybe, because that is something which I found very interesting in last 1 week, which Anuji was telling me for almost more than a 1 year. Like my last online Batak was in August 2021, and that time also had a very beautiful song, and it had a very beautiful background music, not just a background, the music was very lively. And that time I remember she told me ki you pay attention to that music, synchronize yourself with that beats which is playing behind. But out of habit I enjoy more of a lyrics, words. और वो बोलते हैं शब्द ब्रह्म है और शब्द ब्रह्म भी है. So one is Sabda is illusion and Sabda is Brahman, which is like the divine. So it's an illusion as well as the divine. How it is I experienced in last 1 week.
where I literally tried to go behind the words and listen to the deeper. There were 2-3 different tracks which were playing in the Moko Kaha Dhunde track, और बीच बीच में भी कुछ एक ऊपर एक लेयर ऑफ अ ट्रैक आ जा रहा था, तो लेयर के पीछे लेयर जो जाना है, that was something which I found very interesting in last 1 week, where I was able to little bit go deeper behind the words and listen to the music, and behind the music there is something more, and I guess that is something which is helping in one of the topmost dimension where I wish to work and I aspire to work more. उसी हिसाब से अपनी जो दूसरा जो डायमेंशन है कि अपनी बॉडी को तैयार करना. Your body becomes not habitual, I would say, but fit enough to take certain number of chakkar, stamina, building it up and all part. So sometimes I feel like चलो आज यही करते 15-20 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट तक, and you continuously do it, and that's what something which I'm learning and I'm doing it. So physical build up, stamina build up, एक अपने आप का physical तैयारी करना, not just a strength, endurance and stamina wise, but just a normal your get up, the way you stand, the way you sit, the way you are holding yourself. And that is something which Kathak keeps on reminding me. Every class, every practice sessions, that reminds me, and then the practice continues throughout the day, that how I'm holding. और कभी भी अचानक से याद आ जाए, अरे is I'm holding nicely or not. जो आज से मुझे याद है, आज से 10 साल पहले, 10-12 साल पहले जब हम एक थिएटर करना था, प्ले करना था, so my gait used to be like this. Easily I used to slouch like this very easily, and then I had to keep on reminding, and people supporting me, like they used to come and tap me, Vaibhav, look after it. Now I feel like I have improved a lot, and Kathak has also played a role, not just in a slouching, but in a different postures. चाहे आप बर्तन धो रहे हो, चाहे आप नहाने बैठे हो, चाहे आप खा रहे हो, whatever you count it, because I think that is so important to give that respect to our own body. तो जो अपनी body को respect करना, मैं बोलूँगा, yeah, and that is what love is, that you are loving your body. That's a respect you are giving to your body. That is what I'm learning in the physical dimension of it. In the vital dimension, which is of life force and emotions, what I'm learning through Kathak is, and applying every day, is being sensible enough and not too much sensitive. We by nature, like, we are very sensitive, and I particularly very sensitive. I would not go out and talk with people, then I would start doing something, some weird ideas, and feeling hurt, feeling disappointed, feeling jealous, anxious, all that. So much sensitivity is lying there. पर यहाँ पर यह है कि यार चलो गलती हो गई, there is a next moment you need to catch up, you need to keep on moving that part, and at the same time you have to be sensitive enough with what you are doing, even sensitive to the earth, like starting with the Bhumi Pranam itself, that you are sensitive कि आप इतना सारे धा धुड़ुम करने वाले हो अर्थ के ऊपर, so you are sensitive about the earth itself. So that showcase that how, तो जब भी मैं भूमि प्रणाम करता हूँ, like not a single day, not a single time I have, मतलब मिस कर देता हूँ शायद भूमि प्रणाम कभी कभार, पर जब भी करता हूँ तो ये भाव जरूर आता है अंदर से कि you have to be sensitive but not over sensitive, but being a sensible enough, very strong as well as very kind. So that is something which I am applying and learning from Kathak at vital, which is life force emotional level. And last, at the mental level, already I talked about paying attention to detail, but this generation of different ideas, different ways to depict, and following the procedure, following that order. And that was one of my reason of joining first immersion, which Anu is again going to start. So if anyone listening
do join Kathak immersion next month, which Anu is offering. So that immersion and now immersion 2.0 or Vistar 2.0, it's much a deeper immersion. Like कि आप classical dance 10 years ago, 5 years ago, I would have said, no, I am not going to do classical dance. It is too much rigid, too much fixed. So breaking these mental conceptions, following the structures and order, and yet being creative, imaginative, and synthesizing various things. Some of the beautiful domain which I particularly have learned and still learning, and I hope continue learning that part. और ये last week में thanks to Aparupa and Preeti and all, this part of attention to detail and following the procedure, breaking down in a smaller pieces, and then uniting, weaving all of them, something in the mental domain, that's a fourth dimension. And all these four dimensions, from physical, vital, mental, and the highest, one can call psychic or a spiritual, I see all of the Kathak in my day-to-day actions, and it's all living and learning together. And also the beautiful friends who are here, so sharing with them and enjoying their company, and continue little bit of a teasing, little bit of a musty, little bit of encouragement, little bit of scolding. All of that also makes it lively. And always grateful to Anu and all of Kathak Vistar, Kathak Immersion family, Kathak Anubhuti family. I don't know which name precisely to be used, but the whole fraternity of classical dance in a way, and everyone, that so grateful. And last thing which came to me is, as I was preparing last almost a month, I am preparing. तो एक और एक चीज जो सीखी कि there is somewhere a wrong advice might be, I don't know, which is completely a reverse thing which I tried. मतलब मैंने वो गलती की, मुझे ऐसा लगा. तो जब हम 10th 12th ग्रेजुएशन वगैरह जो एग्जाम वगैरह देते हैं, at that time what we do, when we have a time, we take up the hard thing, we give more time to the hard thing, and the things which you know and all, you don't bother about that much in a way, and then you take it up towards the end. But for me this time it backfired completely, because, and I didn't do that. मैंने आज वो किया नहीं. I didn't do that part today, which was the padant. So initial one week or more than a 1 week, I just kept on trying it, getting the bowl right, getting that lay right, and then I said, okay, I would continue doing it. And after that 2 weeks only, I started other parts slowly, and eventually last week I dropped off the whole idea that I would try, but I was not that confident enough to even touch that part. So still that part remains for me to perform one day. That's an aspiration still I'm holding, कि पढ़ंत हो, मैं पढ़ंत करूँ, फिर मेरी recording भी हो. That's an aspiration I'm holding. So life में ऐसी भी कई सारी चीजें होती है कि हम just reflecting this part. So last posture which been shown, that there is a mirror and you are reflecting. The whole life is reflection of everything of it. That got reminded not to be too much ambitious, but go with the flow and give an equal weightage to everything, not just the hard thing, not just the things which are easy and you are comfortable doing it. Even if you are comfortable doing it, there is always something more to pay attention to and bring out that beauty into it. So I don't know, I have given much more diverse perspective on your question and answer. Interesting. Okay. Thank you so much, Vaibhav, for sharing all these perspectives. Like,
And thank you, Apu, Preeti ji, Swapna ji, for your sharing and for supporting Vaibhav. More on that. Yes. So, okay. So thank you so much. And also, जो लोग अभी YouTube पर हमें देख रहे हैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद। और तो आज की प्रस्तुति को यहीं समाप्त करते हैं और अगले महीने होपफुली फिर हम एक और बैठक के साथ आएंगे, एक और शेयरिंग के साथ आप लोगों से मिलेंगे। सो धन्यवाद, थैंक यू सो मच फॉर joining us today, joining Vaibhav today. Iti Shubham, everyone. Thank you.